available funds from the government side. Please, sir. After hearing the APIO, the Commission hereby observes: number one, Section 6 of the RTI Act 2005 states that RTI application can be applied by a person and not persons or a group. Mr. The present application by the group of appellants is deemed DEEMED, deemed invalid as per the provisions of the RTI Act 2005. So this is the next. Despite being an invalid application for which the instant appeal is being heard for the second time, it is to be noted that the group of appellants have absented themselves for in the first hearing as well as today in the second hearing, which implies that the group of appellants are not serious on their appeal. Next, perusing, PERUSING, perusing the application of the persons, group of persons, group of appellants, uh, perusing the application. It is found that their application itself is filed for vested interest rather than public interest. Next, the continuous presence of the PIO in this appeal unnecessarily wastes wastes public resource in attending the hearings from a far off place while the appellants frivolously 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 file appeal and then willfully absent themselves from hearing, which is taken note of
very, very seriously by this commission. Such waste of public resources as well as the precious time of the PIO as well as the precious time of this commission prompts 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 this commission to take into consideration for dismissal of such unwarranted appeals raised in the present appeal as well as such other unwarranted appeals. Next. Pursuant to the above observations, the Commission hereby decides number one, considering this appeal as invalid as well as the willful absence of the appellants, Commission hereby dismiss this appeal with with a strict order that the appellants will not be will not be in liberty to file for the same set of information from the instant PIO. Therefore, this appeal is dismissed and closed. Upside. ऐसे unnecessarily appeal फाइल नहीं करना. ये भी वही है क्या? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी फालिन. सर आपका नाम बता दीजिए. जी, you are the executive engineer. Okay, executive engineer PIO come executive engineer PWD Salim Division Government of Arunachal Pradesh. तो सेम ऑर्डर रहेगा. वो लोग last time also they were absent. Yeah. And this time also they are absent, whereas they have been issued notice of today's hearing as well as last time's hearing. That is one consideration that the Commission has taken serious note of. And then Section 6 of the RTI Act clearly states that a person can file for information. But here there are so many persons. They are not an individual. And RTI cannot be filed as a syndicate by involving two, three persons. That is invalid. So the same orders what I cited just now will go, and they are dismissing this appeal and no liberty given to them to file for the same set of information from your office. Yes. So you also should not entertain them. Such unwarranted applications, applicants should be dealt with very seriously by the PIOs
As well as if it comes to us, we also should deal them very, very uh, outrightly, very seriously. So, sir, you may sign something. Thank you. Actually, this week. Moreover, I used to reply them. Yeah. See, last time also you were present. This time also you are present. So in that way, what we are losing is the state is losing resources. Today, if you have been there at Kalin or wherever your office is, at least some public might have come in meeting for you, wanting to meet you. So they have let those public suffer today. No, last time also the same thing. So you're coming from Palin, going back involves lots of funds, money. So the money is not being again paid by the government. Thank you. You have not heard what I have written in the previous appeal. I have mentioned all these things, and then I have discussed that the prayer appeal also in your paper. Moreover, sir, they used to apply very clumsy way. Yes, voluminous. There also I have it. Yes, sir. That is reflected. Thank you, sir. Mr. Bagemso Mitti versus DFO Lohit. कोई ऑनलाइन है पीआईओ एप्लेट ऑनलाइन है पीआईओ ओके तो मिस्टर मिट्टी आप सुन पा रहे हैं मुझे जी सर। तो बताइए क्या हुआ लास्ट हियरिंग से अभी तक सर लास्ट आपने सर उनके पास ऑफिस में फिर भी हियरिंग लास्ट जी जी लास्ट हियरिंग हुआ था सर, उसमें एक कागज मुझे मिला था हाँ सर। लास्ट हियरिंग हुआ था, उसमें मेरे कागज में मुझे रिप्लाई मिला था हाँ हाँ सर। सॉरी, ये फोन आ रहा है सर। सर सर आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला वो बताइए सर इंफॉर्मेशन नहीं मिला सर। नहीं आपको कुछ वो लोग लेटर लिखा बोला आप अभी सर एक लेटर आया था सर आपका, ये फर्स्ट हियरिंग के बाद। जी फर्स्ट हियरिंग के बाद लेटर आया था, तो ये लेटर ये इसमें 24 अक्टूबर 2025 को आया था लेटर मेरे पास। नोट तो करो उसमें ये मतलब 24 उसमें जो अक्टूबर या मुझे पूछा गया था कि आप स्पेसिफाई करो इन्फॉर्मेशन, और जो रिगार्डिंग जो कंपनसेशन स्टेटस है, क्रॉप्स और क्रॉप्स डैमेज और वाइल्ड लाइफ स्टॉक जो लॉसेस हुआ है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है मुझे ऑफिस ऑफ पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी ईटानगर से मांगने को कहा पीआईओ ने। तो मैंने एक लेटर, उसके जवाब में मैंने लेटर लिखा था सर। तो मैंने लेटर लिखा था, तो मैंने लेटर में साफ साफ कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन है मुझे जो एफएफए ने जो ऑर्डर पास किया था, और आपका जो हियरिंग में भी आपने भी जजमेंट में आपने रिकॉर्ड किया था कि एफएफए ने जो ऑर्डर डायरेक्शन देने के बावजूद भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो आपने ये रिकॉर्डिंग्स आपने किया था उस पे जजमेंट में। तो अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिला सर मुझे, और उन लोगों ने ये स्पेसिफाई करो बोला था ये इंफॉर्मेशन कुछ। तो मैंने वो लोग को मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया था, मैंने फिर से वो लोग रिप्लाई कर दिया था। तो मैंने रिप्लाई करने के बावजूद अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है अभी तक। कोई वहाँ से कोई फॉरवर्डिंग लेटर मुझे नहीं मिला है अभी तक, कि मुझे आज तक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से कोई अपडेट मुझे नहीं मिला है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन जो है ये रिगार्डिंग जो कंपनसेशन स्टेटस है क्रॉप डैमेज और वो जो लाइफ स्टॉक लॉसेस का जो वाइल्ड एलिफेंट द्वारा हुआ है, जो
तो उसके लिए मुझे जो सीसीएफ पीसीएफ ऑफिस में जो वो ईटानगर है, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडायवर्सिटी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने को कहा, लेकिन पीआईओ का स्टैट्यूटरी ड्यूटी होता है कि इंफॉर्मेशंस अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पीआईओ का ड्यूटी होता है कि वो इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र यस, करना चाहिए। तो उसने ऐसा नहीं किया, तो वो मुझे ये एप्लीकेशन कहा को कि ट्रांसफर करना। जी, जी, मैंने एप्लीकेशन में ड्राफ्ट किया था सर। रिप्लाई में मैंने उसको बोला था कि जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पोर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो काइंडली आप उसको जो कंपनसेशन जो क्रॉप्स और लाइवस्टॉक डैमेज का जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो मैंने साफ-साफ सेक्शन 6 अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 ऑफ द आरटीआई एक्ट मैंने ये रिप्लाई दिया था कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला मुझे कि वो लोग ने ट्रांसफ़र किया ना नहीं किया। अभी तक कुछ रिप्लाई मुझे अभी तक नहीं मिला है। जबकि इन्फॉर्मेशन फॉरवर्डिंग लेटर मुझे देना चाहिए था कि उन लोगों ने पीआईओ जो कंसर्न पीआईओ ने है, उसने लेटर को फॉरवर्ड किया ना नहीं किया, जो एग्जैक्टली। रिलेटेड टू कंपनसेशन फॉर क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक डैमेज लॉसेस का। अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और तो मैंने ये भी उन लोगों से माँगा था कि अगर ये रिप्लाई करने के बावजूद और आपको इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद जो मैंने वो लोग को रिप्लाई दिया था, तो इन्फॉर्मेशंस में मैंने ये साफ-साफ कहा था कि अगर आप लोग ये इन्फॉर्मेशन ये सबमिशन करने के बावजूद, ये मेरा जो रिप्लाई है, उसके बावजूद अगर इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं होगा, सुन लिया आपका बात को, सेम बात को ही रिपीट कर रहा है। तो अभी लिखो द एपिलेंट प्रेजेंट थ्रू ऑनलाइन मोड द पीआईओ कम डीएफओ तेजू फॉरेस्ट डिवीजन, हाँ तेजू डीएफओ तेजू डिवीजन repeatedly absent for time, the second time without intimating the reason for its absence to the commission and heard the appellant. The appellant stated that after the first hearing held on 25th September 2025, the PIO had re- written a letter to him dated कौन सा अक्टूबर बोला था वो 24 October 25, stating in the letter that ट्रांसफ़र the information ट्रांसफ़र किया जाए कंसर्न the जो अथॉरिटी the है उनको। the तो information सर that मेरा यही सुनिए रिक्वेस्ट आप सुनिए अभी the information sought by the appellant is not available with the office of the PIO, and therefore to file the RTI application at the office of the PCCF। PCCF वाइल्ड लाइफ ऐसा है ना, क्या है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी, जी, पीसीसीएफ जो वाइल्ड लाइफ बायोडायवर्सिटी ईटानगर, वहाँ पे जो है वाइल्ड जो वाइल्ड कंपनसेशन लाइफ स्टेटस वाइल्ड लाइफ क्या बोला? एंड वाइल्ड लाइफ एंड बायोडायवर्सिटी ईटानगर। वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी सर जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन जो है अरुणाचल प्रदेश। कथा प्लांटेशन का सर, हाँ कथा प्लांटेशन का जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो लोग जो है इन्फॉर्मेशन देगा बोला, लेकिन अभी तक नहीं दिया सर। हेलो सर, सुन जी पा जी रहे हैं मुझे? सुन रहे। ये कथा प्लांटेशन का जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो मुझे माँगा गया था, तो मैंने उसको दे दिया था कि फिर से मैंने इसको लिख के मैंने रिप्लाई में दे दिया था। मैंने एन्क्लोज़ करके दे दिया था। तो कथा प्लांटेशन का अभी तक इन्फॉर्मेशंस नहीं मिला है, और जो बाकी जो कंपनसेशन स्टेटस है क्रॉप्स और जो वाइल्ड लाइफ क्रॉप्स और जो लाइवस्टॉक जो इन लॉसेस द है, सेम उसका जो लेटर इन्फॉर्मेशन है मुझे द पीसीसीएफ जो पीआईओ वाइल्ड लाइफ
तनख्वाह से लेने को has कहा। asked तो सर मेरा ये दरख्वास्त है कि जो पीआईओ है, कंसर्न पीआईओ है, जो the भी appellant डीएफओ है, उसको एक डायरेक्शन दिया जाए कि वो जल्द से जल्द to इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड किया जाए, और बिना जो टाइम जो वेस्ट हो रहा है, the 1 साल से PIO ज़्यादा हो गया सर, अभी तक इन्फॉर्मेशन stated नहीं मिला है। in the letter तो to सर the appellant that the information sought under serial number 1 of the Form A of um, appellant will be provided by the PIO, and regarding the other information related to crop damage and livestock losses due to wild elephants at Shunpura area can be obtained from the Egyptian Wildlife and Biodiversity. Yes, sir. Next, but till today, no information have been provided by the PIO despite its commitment to provide the next regarding the information that I have been advised to file application before the PTCF Wildlife and Biodiversity Government of Arunachal Pradesh. It is to be noted that as per Section 6, Clause 3 of the RTI Act 2005, the PIO is under obligation to transfer the application to the competent office from where the information can be obtained. But till today, the PIO has not provided any information nor transferred my application to the competent office from where I can be obtaining or given the information. Who is that? Next, after hearing the appellant, the commission hereby observes number one, the PIO has been repeatedly sent despite served on with notice for the hearings. Such negligence of statutory duties by a PIO to attend court hearings when an appeal is preferred against him is as serious
a serious issue which has to be dealt with very strongly by this commission to secure such erring, ERRING, erring PIOs to let them attend the court hearings. Next, the statement of the PIO in the letter given to the appellant. This is that in law as per the provisions of the RTI Act 2005 for the fact that if information sought by an individual is not available with the office of the PIO has to transfer the application to the competent office oblique authority from where the applicant applicant can obtain the information. And in this case, the PIO has failed to perform its duty of transferring the application. Next, under the above stated observations, comma, facts, comma, circumstances, the Commission hereby order number one to issue warning summon to the PIO to be present in the third hearing without fail, failing which action against him will be initiated as per the provisions of RTI Act 2005. Next, the PIO is ordered by this commission to transfer the application of the appellant to the competent office public authority from where the applicant can obtain the information which are not available with the office of the PIO. Next, the appellant to be present in the next hearing without fail, failing which this appeal will be heard and determined ex parte. Next, send this order to both the parties and fix the next date of hearing on also that one.
23rd अप्रैल को एक बार लास्ट, मिस्टर मिट्टी, इफ यू कैन हियर मी, कैन यू हियर मी? Yes, 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 I can Okay, hear you. I fixed last hearing. In the last hearing, if still the PIO doesn't attend to, I'll take initiate whatever actions, or I'll pass on the judgment to provide you the informations, and in default, the action will be initiated against the PIO. So एक बार Oh, उनको thank you, sir. बुलाते हैं थर्ड टाइम के जी सर। लिए। ऑर्डर तो आप सुना होगा ओके। खुद। यस यस हमने सर, ऑर्डर मैंने में सुना ये है। लिखा कि हमने ऑर्डर में ये लिखा कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको जी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में ट्रांसफर करने का, जी जी सर, मैंने जो एक। इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। जी सर। ट्वेंटी थर्ड सर वो। ट्वेंटी थर्ड अप्रैल 10:30, 10:30 AM को। 23 अप्रैल। हाँ, 10:30 AM। सर मेरा एक तानिया रिक्वेस्ट था। जून। जी। सर। हाँ हाँ, सर बोलिए। मतलब ये कंपटीशन जो स्टेटस है क्रॉप्स और जो लाइवस्टॉक लॉसेस का ना सर। जी सर उसके पास नहीं है बोला तो सर, लेकिन जो कथा प्लांटेशन है ना सर, कथा जी। प्लांटेशन के लिए मैंने वो दे दिया वो लोग को, तो वो लोग बोला था कि इन्फॉर्मेशन दे देगा कथा प्लांटेशन का। अभी तक जी, कथा उनका भी प्लांटेशन मैंने आया नहीं रिकॉर्ड है। किया है, उसको भी मैंने जी रिकॉर्ड किया है। सर, उसका पास ये कथा प्लांटेशन का सर उसके पास रिकॉर्ड है सर। लेकिन जो ऑर्डर क्रॉस डैमेज और लाइवस्टॉक लॉसेस जो कंपटीशन ऑर्डर डिटेल्स है में उसका पास नहीं है बोला ऑर्डर सर। वाला थर्ड थर्ड लाइन में, the PIO to provide the information related to the compensation for jungle clearance or the kata plantation। एक एक लाइन मैंने लिख दिया है आपको देने के लिए, सर जो उनके ओके, पास थैंक है। यू सर। थैंक यू सर। तानिया जून वर्सेस DLRSO पालिन। यस। तानिया जून ऑनलाइन है? आप आप the appealant is absent without intimating reasons to the commission for reception। The PIO आप खुद डीलर सो है। हाँ सर। का नाम सर पूरा बता। PUD। The PIO। हाँ, BAK। इसमें आप इसका फॉर्म ए को देखा होगा आपने। हाँ सर। आपका क्या क्या बोल रहे हैं उसमें? सर हमको लगता है ये हम लोग का नहीं है। ये गलत हम लोग को दिया जैसा, जो डॉक्यूमेंट मांगा हम लोग का तो बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं था ना। उन्होंने मांगा है रिगार्डिंग अपॉइंटेड पोस्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर UDC LDC पियोन ड्राइवर all MTS post etc. Furnish appointment order copies, furnish class 10 pass certificate copy, furnish joining report copies, furnish class 12 pass certificate copies, furnish seniority list copies, furnish DPC copies, furnish advertisement and local newspapers copies, furnish STTRC certificate copy, 2018 to till date, यानी कि almost 9 years, 7 years, 26, 8 years। ये सब डॉक्यूमेंट तो हम लोग के पास नहीं होते जी। सेंट्रल डायरेक्टर या तो अगर DC दो में हो सकता है, हम लोग के पास तो नहीं होता। नहीं, आपके पास होने से भी आप नहीं दे पाएंगे ये इस ये सब। he is not, he doesn't have any locus standi to ask for all this information। हाँ, he can be given joining report, आप उनको दे सकता है, और एडवर्टाइजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर वाला कॉपी दे सकता है, बाकी तो नहीं दे सकता। बाकी तो एग्जेम्प्टेड वाला है, क्योंकि उन्होंने ये आदमी लोग का साथ UDC LDC पियोन ड्राइवर MTS पोस्ट में है। बाकी लोग का इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, तो वो भी उस इंटरव्यू में पार्ट लेना चाहिए।
वो खुद इंटरव्यू में पार्ट लेके दूसरा आदमी मिला है, हम नहीं मिला है, तो हमको जानना पड़ेगा आपका क्या है, आपका पेपर सर्टिफिकेट ऐसे फ्रॉड भी हो सकता है, बनावट नकली भी हो सकता है। So as a competitor who competed with you in that very exam, I have my locus standi to ask for it. लेकिन उन्होंने तो इसमें यूनिवर्सिटी एलएसी पियन ड्राइवर में तो एमटीएस में इंटरव्यू हुआ तो अभी तो पार्ट नहीं लिया होगा, तो ही डजंट हैव एनी लॉकस स्टैंडर्ड। बट व्हाट एवर भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर कॉपीज वो दे सकता है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट कॉपीज वो दे सकता है, एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, बाकी तो एग्जेम्प्टेड है। किसी का सर्टिफिकेट को आप ऐसे यूज में नहीं मांग सकते हैं, लेकिन वो आज नहीं है ना, आज होने से हम डिसाइड भी कर देना था। एन प्लस वो 2018 से लेके 2018 से लेके आज तक आप लोग कुछ अपॉइंटमेंट ऐसा इंटरव्यू कुछ किया? हाँ सर, हम लोग अथॉरिटी भी नहीं है। हाँ हाँ, और ये लोग का जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर कॉपीज तो लेकिन आपका ऑफिस में तो होगा विदाउट दैट तो ज्वाइनिंग कैसे करेगा? ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी तो आपके ऑफिस में होगा। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट तो दे सकते हैं, नहीं आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट वो दे सकते हैं, दे सकता नहीं, देना है। सर करेंगे वो भी सर, एक्चुअली डायरेक्टर ट्रेन से एक्चुअली मांगना चाहिए, वहां से जस्ट हम लोग को ज्वाइनिंग ट्रांसफर ट्रांसफर होगा, ये पीरियड में तो सर कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मल्टी वाला तो सर डीसी में कंट्रोल, मल्टी टास्किंग हम लोग बिल्कुल लैन वाला नहीं, इसका वो अगर आज होने से हम इसको डिसमिस कर देना। वो वीक वे से हाँ हाँ हाँ, नहीं प्लस ये अननेसेसरीली बहुत जगह, हर जगह में ये आरटीआई डालता है। आरटीआई इस उसके लिए नहीं है ना कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिपार्टमेंट में हर एक प्रोजेक्ट के लिए आरटीआई करो, वो नहीं है ना। आरटीआई इज मेंट फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। जहाँ पे जैसे ईटानगर में 10 रास्ता का प्रोजेक्ट आया है, एक दो में से कहीं एक प्रोजेक्ट में थोड़ा कुछ खामियां देख रहा है, तो उसमें आरटीआई करके हुआ द कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट वेयर द स्पेसिफिकेशंस, वो निकाल के जहाँ पे आप उस कॉम्पिटेंट कोर्ट में या या तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो में या तो वो लोकायुक्त में या तो स्पेशल कोड ऑफ करप्शन है, करप्शन कोड है, सेशंस कोर्ट, उसमें केस करने का। लेकिन सर ये हम लोग पास आया भी नहीं, आने से तो हमें भी अच्छा से ब्रीफ कर आपका ये वहाँ की ये, और ये आपको पोस्ट से भेजा है तो अब, लेकिन इसका फोन मेरे को तो मिला होगा, मिला है। नहीं पर्सनली आने का जरूरी नहीं है, इवन बाय ईमेल एनीवन कैन सेंड यू एन एप्लीकेशन फॉर द इंफॉर्मेशन, बाय पोस्ट ऑल्सो दे कैन सेंड यू, उसमें नहीं आना ही है करके नहीं है, बट उसका जो एप्लीकेशन है, whatever information he is seeking from you should be very precise, और ऐसा ओवर वेग नहीं होना इससे तो, अरे वो लिखो, what the PIO PIO stated that the information is sought by the applicant in his Form A are all vague and the, the applicant does not have any locus standi, LOCUS SHRI to request for such information regarding appointment
order, education, qualification, certificate, joining report, seniority list, DPC details, because these information are private and person seeking such information had to come with the local standard to ask for such information. Regarding the other information sought, like the advertisement copies published in the local newspaper and appointment order copies and joining report copies can be provided to him. उस- इसको तो लेकिन आप देना पड़ेगा अपॉइंटमेंट ऑर्डर को आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट सर उसको हम लोग डायरेक्ट डेट में ऑर्डर कर सकते आप इस देन हैं आप क्योंकि आपके पास नहीं है तो हाँ आरटीआ ये बोलता है आपके पास नहीं है तो आप 5-6 दिन में ही एक्चुअली ट्रांसफर कर देना तो आप अपना इसका फॉर्म एक को जहाँ पे मिलेगा वहाँ ट्रांसफर कर दीजिए तो आपका ड्यूटी खत्म हो जाता है And if the information sought by the applicant are not available with the office of the PIO, the PIO submitted in the court of his commission that he will transfer the Form A to the office of the Director LM, Government of Arunachal Pradesh, wherein all the information sought by the applicant can be obtained subject to certain information which may be exempted under the RTI Act 2005. After hearing the PIO, the Commission hereby orders number one, the appellant to be present in the next date of hearing, failing which this appeal will be heard and determined ex parte. Second, the PIO to transfer the Form A of the appellant to the competent authority from where the appellant can obtain the information. Next, the PIO to be present in the next date of hearing, failing which necessary action against the PIO will be initiated as per the provisions of RTI Act 2005. Serve the notice of the next hearing to the appellant. Fix the next date of hearing on सर 23rd अप्रैल 10:30 है 23rd अप्रैल आप लोग मत बोलिए ये आप आपका पहले भी बहुत एक दो केस है कि आप लोग नहीं आया करके डायरेक्टर को आना पड़ रहा है हम लोग डायरेक्टर को अरेस्ट वारंट इशू किया था
लेन वाला कनाडा लिखा नहीं हालिम का तक है। सर हम थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ ओके 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 हाँ बिकॉज वो वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और कमिश्नर मैडम थी या डायरेक्टर मैडम थी उसमें हाँ। रिबा मैडम ना Yeah. शी केम टू द कोर्ट वी हैड इश्यूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हिम अगेंस्ट उसमें हम सीनियर वाला सुनिए हम जी होगा फॉर्म ए को ले हाँ हाँ इस फोटो कॉपी कर दिया क्योंकि अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रांसफर करने से भी आप एप्लीकेंट को भी लिखना पड़ेगा कि आपका फॉर्म लेके हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ट्रांसफर कर दिया बोल के उतना भी आपका ड्यूटी फिनिश होगा हम हाँ 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 एक मेमोरी बुढ़ापा आ रहा है हम हाँ ऐसे अच्छा लोग देखते हैं वो ऐसा होता है वो जी इधर में साइन कर लीजिए ना हाँ, सर। आपका मोबाइल नंबर शेरा ताजी वर्सेस डायरेक्टर प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट शेरा ताजी डायरेक्टर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट भी नहीं है both parties absent so hearing adjourned is connected and send notice to both parties unit Roru versus EE RWD Palin Donic Roru PIO RWD EE RWD Palin नहीं है absent the excellent present the PIO absent without close to डाल दो फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी में एक हफ्ता का अंदर में आपको इंफॉर्मेशन को देगा बोला था ना तो अभी तक नहीं दिया है कुछ भी अभी तक नहीं ना कुछ भी लेकर भी आया उसका नाम को मालूम है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन है दो आलो उसका नंबर या नाम नहीं तो रिदो रिदो RIDO हाँ और ए डबल एल ओ हेलो हाँ PIO कम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD पालिन डिवीजन ऐसा लिखोगा एब्सेंट तो अभी कुछ कारण से आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कानून में ये लिखा है कि आपका अगेंस्ट में जब कोई केस होता है या आप किसी को केस करता है तो आपका एब्सेंस आप कुछ बीमारी से या कुछ देरी से नहीं आ पाया तो एक चांस तो देता है दोबारा एक चांस ना दैट इज गिविंग फेयर चांस ऑफ बीइंग हर्ड बोलता है हम लोग का लीगल टर्म्स में तो वो आज नहीं आया तो हम लोग एक दूसरा डेट फिक्स करेंगे उसे सुनना पड़ेगा कि आपको अभी तक क्यों इंफॉर्मेशन नहीं दिया है आपका फॉर्म एक तो है आप आंतरिक फंड का अप्रोच रोड फ्रॉम राडांग विलेज टू मापी का दादी उसको मांगा है जी तो इसको देना चाहिए ये तो एग्जाम्पशन में तो नहीं आएगा ये नहीं आएगा ये देने वाला लाइक हाँ हम तो ऐसे दूसरा नहीं मांगा हाँ नहीं देने वाला है ये तो सही है तो पूछता है उनसे जानता है कि क्यों नहीं दिया अभी तक वही तो सर इसलिए हम लोग को एक समन भेजेगा अभी सर आप लोग को ऑनर करना चाहिए ना जी जी हम लोग नहीं को honor इसलिए कर दिया अभी है। हम लोग कमिश्नर लोग को भी अरेस्ट करवा के लाता है हाँ। हम लोग के पास पावर है पहले वाले लोग तो मालूम नहीं वो लोग ऐसा कुछ यूज नहीं किया होगा हम तो यूज हम लोग तो करता सर है आना जाना बहुत हम लोग का भी खर्चा जाना है वो लोग भी तो अटेंड करना चाहिए तो करना ऐसे समय चाहिए में नहीं सर करेगा
नहीं आएगा तो अरेस्ट करा के लेके आएगा। सर हम लोग को इन्फॉर्मेशन देने से सोचते थे। हाँ, तो अभी तो हम लोग आना जाना यहाँ पे तो उपाय नहीं है, उसको रहने के लिए भी जगह नहीं है। हियरिंग एडजॉर्न और वो जो नॉर्मल है ना ऐसे वाला केसेस में appellant stated that despite the order from the first appellate authority on date 11 September 2025. Okay. Yeah. So for 16 September 2025 to provide the information to the appellant, the PIO has failed to provide the same till now. After hearing the appellant, the commission adjourned the hearing due to the absence of the appellant. Yeah, PIO. And rest 23 अप्रैल 10:30 को अपलोड कर लीजिए, फिर से सुनेगा। समोन्स भेजो, समोन भेजो, समोन भेजो। हाँ, साइन 10:30 है। अब उसमें फिर ले आने से आपको भी एक मौका देगा, फिर आप भी आना है। मेरा 2 केसेस। हाँ हाँ हाँ, वो भी सेम ही है क्या? जी सर, सेम नहीं है, सब्जेक्ट मैटर तो अलग है, हाँ लेकिन हाँ, डिवीजन तो सेम। सेम तो सेम ऑर्डर जाएगा, हाँ। सेम PIO है। हाँ, ना ये भी सही है आपका, ये भी तो देना है, इसमें भी तो ऑर्डर है ना। हाँ सर, देने का लायक हाँ, हम बिल्कुल नहीं लगा है। वही सेम ऑर्डर देने लायक तो सर हम दिए हैं। बस। वो लोग सर देने के लिए क्यों ऐसा कर रहा है, वही है सर। नहीं, काम तो किया कि नहीं किया है? सर काम भी इनकम्प्लीट करके रखा है ना, बनाया नहीं, इसमें कंप्लीट करके आधा बना के रखा है, इसलिए हम लोग सर उस चीज पे बनाया, ऑडिट कर रहे हैं ना। समाज के लिए ऑडिट कर दे रहे हैं ना, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ना सर। हाँ, ये तो ठीक है। नेक्स्ट डेट लिख गया ना, दोनों का वही है। हाँ ठीक भाभी मारी वर्सेस EEPWD Chiang Tajo. EEPWD Chiang Tajo. Center. आपको कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला? ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ उसका सर वो सर छुट्टी होने से नहीं, दिस हैज बीन, वो ये अमेंडमेंट आप आगे करना से ठीक था, अभी तो अमेंडमेंट तो नहीं कर देगा। आइडिया नहीं था, तो ऐसा करके कालीन टाइम साहब को बात किया है, पॉइंट बताया है, तो फिर डाला है ले तो क्या क्या ऐड करना है इसमें? उसमें सर ऐसा होता है, जो बिलो जो मारा है ना, वो 554 का था, वो 33 बिलो मार के ले गया, तो 194 रिमेन है, 194 सीएफ को टैक्स रिमेनिंग है। उसमें फिर ये प्लानिंग से कुछ RA होता है, RAA एडवाइस एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल चाहिए, वो उसको यूज करने के। तो अभी यार उससे का जो कलेक्ट से जो डिपार्टमेंट वाला से होता है, वो भी यूज हो गया है। तो मेरा वही है कि एग्रीमेंट नहीं दिखा रहा है, उसके बाद वैसा होने से हम 50% भी मार के वगैरह, तो उसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट का थोड़ा हमको वो क्या हुआ, डिप्राइव किया हो। अभी तो एक साल होने जा रहा है। अभी तक आपने जो मांगा है वो एग्रीमेंट कॉपी है और लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी। ऑल पेपर्स शुड बी CPC। ओके फाइन, ठीक है। हाँ, ये आप तो, आपका फर्म का नाम क्या है? ओके, आप उसका प्रोप्राइटर है? नहीं, हम उसका पावर ऑफ अटॉर्नी आपका पास में पावर ऑफ अटॉर्नी है? आप दिखा सकते हैं अभी? मिल रहा है, तो हम वो बिदर उसमें वो किया विदाउट दैट
पावर ऑफ अटॉर्नी टू आई कैन नॉट एंटरटेन, हम एंटरटेन नहीं करेगा। नेक्स्ट में आप लेके आओ, आज जान लीजिए, क्योंकि अब एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप फर्म का ओनर बोलने से यू डोंट नीड हो जाएगा सर, मेरे पास है वो जी 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 होगा तब तो क्योंकि ठीक है, टेंडर आई एंटरटेन, और इसको हम डिसमिस कर देगा। टेंडर If you fail to provide the power of attorney letter in the next date of hearing, I'll dismiss it because आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सर वो टेंडर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ देता है सर। जी 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 नहीं, वो तो एक पीओए होना पड़ेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी होना पड़ेगा। कोर्ट से करना पड़ेगा ना हम लोग का नहीं, अब लोग आजकल कोर्ट में नहीं है, आजकल ऐसा हो गया, हम लोग का समय में ये सब नहीं था, ये नौकरी नहीं था, अभी नौकरी हो गया, सब जगह नौकरी है। आप और वो आपका भैया आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन या कोई भी कोर्ट में हियरिंग, ये सब के लिए हम ऑथराइज कर रहे हैं हो जाएगा सर, वो है करके। हमारे पास। तो एक नोटरी में सील साइन करने से होगा। सर वो In कोई the तो absence of the PIO, the hearing is adjourned and next date होगा। उसमें बाकी में PIO को एक समन भेजो, वो नहीं आने से, और एपिलेंट को भी आना है, एपिलेंट to be present in the next date of hearing, पहले ही वो सब तो हम सर ये वो कोई नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा अभी। आई हैव टू बी इम्पार्शियल नो। हम आपको आपका केस को हम आई कैन सी थोड़ा प्रूडेंट है, सच्चा है करके हम पीओए मांग रहे हैं, और इसको अभी भी हम आई कैन डिसमिस इट। आपका सीरियसनेस को, सिंसियरिटी को, इंटेग्रिटी को देख के हम आई एम एडवाइजिंग यू कि नेक्स्ट टाइम में पीओए लेके आइडिया नहीं था सर, ये जी खाली टैक्स का कुछ कुछ है। जी 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 होगा। नेक्स्ट डेट 24 क्या था, 23 अप्रैल 10:30 AM। चलिए।